ओके, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, मैं कहूँगा कि ये कोशिश करनी हमें ठीक ठाक हम तब कर लें, ये मतलब इसको अटेंड करना सारे क्लासेस को जो भी है ऑनलाइन है, क्योंकि जैसे ही ये विंटर वेकेशन खत्म होगी तुम्हारे वो इसका सीआईए होगा, तो इसको छोड़ना नहीं। और वैसे भी मुझे लगता है तुम में से मेजॉरिटी ने पहला सीआईए नहीं दिया, और इस बार जो उसका क्राइटेरिया है वो ना फॉर अपीयरेंस इन एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस, वो ये है तुम्हें हर कंपोनेंट पास करना है सीआईए का, इंक्लूडिंग प्रेजेंटेशंस एंड जो भी है आपका असाइनमेंट्स, अटेंडेंस। अगर एक में भी तुम फेल हुए देन यू वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर द एंड सेमेस्टर एग्जाम। इस बार उन्होंने थोड़ा इसको स्ट्रिक्ट किया था। पहले होता था ओवरऑल तुम्हें 50 में से 25 लेने होते थे। अगर ओवरऑल तुम्हें, हाँ 40 में से 20 है तुम्हारा, अगर तुम ओवरऑल लेते 40 में से 20, भले ही किसी कंपोनेंट में फेल भी हो जाते हैं तो यू वुड स्टिल बी एलिजिबल फॉर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तुम्हें हर कंपोनेंट पास करना है, वो तुम्हें ध्यान में रखना है। इस सेमेस्टर से वो चेंज हुआ है, शायद तुमने नोटिस भी देखा होगा डिपार्टमेंटल वो व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इसलिए वो भी ध्यान रखना है, इसलिए भी तुम्हें पढ़ना है। और दूसरा ये कि इसके बाद ही सीआईए शुरू हो जाएंगे, सो वो भी तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, तो सो लेट मी स्टार्ट द क्लास। तो जैसा कि मैंने कहा, तुम कोई भी क्लास मिस नहीं करना, और ये अटेंडेंस तुम अपने पास रखोगे और फिर मुझे भेजोगे उसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि इस यहाँ पे मुझे पता नहीं कैसे लेंगे स्क्रीनशॉट लैपटॉप पे। और हाँ, कल तुम्हारी ये क्लासेस जो टाइम टेबल के हिसाब से वो कब खत्म हो जाती है? सर 5 बजे। हाँ, कितने बजे? 3 बजे कि 4 बजे? सर 5 बजे। 5 बजे खत्म हो जाती है कंटिन्यूअसली? जी सर। हाँ जी सर। नहीं, एक्चुअली सर मेरा लंच ये है 20 का बस। लंच, हाँ शायद मैं कल मेरी 12 बजे है ना एक्चुअली क्लास टाइम टेबल के हिसाब से, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कल मुझे शायद वो यूनिवर्सिटी जाना पड़े, तो शायद मैं उसको टाइम को थोड़ा आगे कर लूंगा, शायद लंच ब्रेक के टाइम। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं वहां मैं वहीं पे क्लास लूंगा वहीं से, लेकिन पता नहीं मैं कब वहां पहुंचूं। ठीक है, कभी कभी उसका नहीं रहता पता, लेकिन उसी वक्त हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, हेलो, आर यू लिसनिंग? अरे सब ने ऑन करके सो तो नहीं गए? कहाँ हो सब? हेलो सीआर, हेलो, हेलो, यस सर। यस सर। सभी है वहां पे? तो मैं कह रहा था कल मैं अकॉर्डिंगली थोड़ा सा, शायद कल भी हमें थोड़ा सा टाइम चेंज करना पड़े। परसों से नॉर्मल हम रहेंगे, लेकिन कल मुझे वहां जाना पड़ सकता है, तो उस वजह से शायद हमें थोड़ा सा, शाम को नहीं करेंगे इतना, लेकिन थोड़ा सा शायद शिफ्ट करना पड़े। ओके, एनीवेज, तो हम जो वहां जहां पहुंचे थे वो था फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑफ अ सरफेस। अब सरफेस का क्या है, एज यू ऑलरेडी नो, कि surface is defined as r is equal to r at uv, where u and v are two independent parameters. So we can think of, in fact, let's talk about surface patch, क्योंकि हम locally surface theory को study कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे plot करते थे, it lives inside our surface R3, उसका एक patch है, और of course we can think of it as a mapping from an open set inside R2 to R3, क्योंकि 3 पैरामीटर्स है तो R2, and it lives inside this 3-dimensional space, x ये है वैसे, x, y and z, इसलिए it is a mapping from R2 to R3. Now हम जहां पहुंचे थे हमने बात की थी the first and second fundamental form. तो first and second fundamental form of a surface, as you know, is defined as these are two quadratic forms, twice f du dv plus g dv square, this is our first fundamental form, and then l du square plus twice m du dv plus n dv square,
right? This is the second fundamental form. इसमें E जो है, as you know, it is just ru dot ru. Just to remind you, f is equal to ru dot rv, which is the same as rv dot ru. And this ru का मतलब है, of course, partial derivative of this r with respect to u. Now, you know this much. And g जो है वो है rv dot rv. And of course l and m तुम्हें पता ही है. What is l? L is, I think, ruu dot किसके बराबर होता है? Second order fundamental magnitudes. Where would be? मैं भूल गया खुद. कोई मुझे बता सकता है? Dot m surface normal. हाँ, right. Unit surface normal. और m है ruv dot n, and n है r sub vv dot n, where n is the unit surface normal at a point on the surface. These are all evaluated at a point divided by the length of ru dot r. और इससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉपर्टीज की, कुछ प्रॉब्लम्स की, और आई थिंक जो लास्ट वाला हमने किया था, लेट मी चेक, वो क्या था? We calculated these fundamental magnitudes for the Monge's surface, right? Monge's surface का मतलब z is equal to f of xy, and in this case I can of course parameterize the surface as ruv, यानी मैं choose कर सकता हूँ अपने parameters को xy coordinates जो हैं हमारी ambient space की. Now जो हमें शुरू कर इसके बाद करना है वो है वाइनगार्टन इक्वेशंस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, या जहां पर हमने छोड़ा था, वाइनगार्टन इक्वेशंस. Okay, now what we do, we know that n, and let me write it down. Now we know that n is a vector. Of course, it's a unit vector of constant magnitude or magnitude 1. अगर एक 1 नहीं भी होता, constant हो, तब ये true होता. That is, then of course n must be perpendicular to its derivative. यहाँ पर हमने लिया total derivative. बात ही की है, because dn would be basically n sub u du plus इसका complete differential. टोटल डिफरेंशियल इसके बराबर होता है, ये हम कर चुके हैं मल्टीवेरिएट कैलकुलस में भी, और ये इसके परपेंडिकुलर होगा बाय द सेम आर्गुमेंट. जैसे हमने वो, वी कैन शो दैट एन यू डॉट एन भी 0 होना चाहिए और एन वी डॉट एन भी 0 होना चाहिए. उसका वजह क्या है? हम लेंगे एन डॉट एन इज इक्वल टू 1, then you differentiate with respect to u and with respect to v, right? And you will get on the right hand side 0, then use that dot product is commutative, जैसा कि उसमें होता है, बिल्कुल यहाँ पर भी ये हमें मिलेगा. और अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, तो I can assume that n dot dn is equal to 0. Hence that means इसका मतलब n जो है वो इस dn के perpendicular है, right? So hence I can say that dn जो है anything. Now what is n? N is basically surface normal. It is normal to the tangent plane at the point of a surface. तो इसका मतलब जो भी इस n को परपेंडिकुलर है वो सारे वेक्टर्स कहाँ रहते हैं? टेंजेंट प्लेन में. तो इसका मतलब dn जो कि है बराबर n sub u du plus n sub v dv lies in the tangent plane. That is plane generated by, of course, that is plane by tangent plane. I mean plane जिसकी basis जो है, which is generated by r sub u and r sub v. Now
Now, if what I do is that if I take this now, if it lies inside this plane, also n dot ru जो है वो 0 होगा because ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट है. So it is perpendicular to both ru and rv. So n dot ru is equal to 0. So and if we differentiate partially with respect to u, so what do I get? I will get n sub u dot ru plus n dot ruu is equal to 0. But that would give me n dot r sub uu is equal to minus n sub u dot r sub u, which I know that this is left hand side है. This is exactly जैसा कि हमने अभी किया था second fundamental magnitude, and L can also be written as minus n sub u dot r sub u, right? Similarly, if I partially differentiate it with respect to v, so similarly, if we partially differentiate, let's call this equation 2, इसको हम मानते हैं equation 1. So, okay, if we partially differentiate 2 with respect to, let's call it v, we will get m is equal to, ये तुम आराम से देख सकते हो, m is equal to minus nv dot ru. इस तरह से ये मिला बिल्कुल इतना ही easily. And also if we differentiate n sub v dot n dot rv, ये भी 0 के बराबर है. Partially with respect to u, you will get basically nu dot rv plus n dot rvu is equal to 0, which means that n sub u dot rv is equal to minus n dot ruv, which is nothing but minus n, right? मैंने partially किसको with respect to u, and if you differentiate it partially with respect to, यानी minus m जो है इसके बराबर भी है, मतलब m जो है वो इसके बराबर भी है minus nv dot ru और minus nu dot rv, मतलब ये भी इसके बराबर होगा. And differentiating partially with respect to, अगर मैं इसको partially differentiate करूं with respect to v, then you will obviously get nv dot rv is equal to minus n dot rv, which we know is equal to minus n. So lmn can also be written in this manner. यानी l को हम मान सकते हैं, l is minus nu dot ru, m को minus nv dot ru और minus nu dot rv, and हमारा जो तीसरा fundamental magnitude है n, we can think of it as minus nv dot rv. मतलब अगर मैं इसको ऐसे सोचूं, ठीक है? So that was one of the first things. Second, now we want to derive Weingarten equations. वो ये है, now we can write, yeah, it is equivalent to one जो मैंने पहली इक्वेशन लिखी थी, n dot dn is equal to 0. Basically, it is equivalent to these two equations. So it can be written as n dot nu is equal to 0, and
n dot nv, यहां पर हम यूज कर रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, so therefore it would be perpendicular to its derivative, right? So but then it also means that nu and nv lies in the tangent plane to the surface because they are perpendicular to n, lies in the tangent plane, which is of course to the surface, which is of course generated by the first partials yani of r, yani ru and rv, and anything inside the tangent plane can be written as a linear combination of r sub u and r sub v. That means n sub u and n sub v can also be written as a linear combination of ru and rv. So we may write n sub u as, let's call it a sub ru plus b sub rv for some scalars, for some real numbers in this case, a and b. Right? Now what I do, I use my earlier equations. So if I take the partial derivative, now taking the partial derivative, not partial derivative, dot product of this equation, of the equation, of course, what do I have? With ru and rv successively, I will get n sub u dot r sub u is equal to a times r sub u plus b times r sub v whole dotted with r sub u. Now I know that ru dot ru jo hai, of course dot product distributes our vector addition. So it would be ru dot ru, that would be e, that means it is actually equal to ae plus bf. And from this equation, I will get, but left hand side is equal to minus L. So I can write it in terms of fundamental magnitudes as AE plus BF plus L is equal to 0. Right? And of course, दूसरी equation क्या होगी? I will get NU dot R sub V is equal to ARU plus BRV dotted with RV. Now, as we have done, this is actually equal to minus M. Or of course, RU dot RV is equal to F and RV dot RV is equal to G. So we get AF plus BG plus M is equal to 0. और मुझे पता नहीं equations के मैंने कितने नाम दिए, अभी 2 ही दिए, I think, right? So let's call this 3 and 4. So I want to find the values of A and B basically in terms of the first and second order fundamental magnitudes. So if I call this 3, okay, let me write it, 3, and if I call this 4 and I solve, these are two linear equations in EF, G and LM, in AB, two linear equations in A and P, which are my unknowns. These are knowns, I can find the partial derivative at a point of a surface and find EF, G, LM. Now, if I solve it, then using the cross multiplication method, I can get A divided by, it would be Fm minus GL is equal to B divided by B divided by FL minus EM. FL minus EM is equal to 1 divided by, of course, 1, चूंकि ये स्केलर है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, it should be EG minus F square, यानी E
g minus f square, which we know we denoted by h square. So therefore मेरे जो ये a and b है, a बराबर है fm in terms of first and second order fundamental magnitudes divided by h square, और b जो है वो है fl minus gm divided by h square. Okay, so that n sub u is equal to fm minus gl divided by h square into r sub u plus fl minus gm divided by h square into r sub u. So I now know this linear combination in terms of the knowns, the first and second order fundamental magnitudes. Let's call this equation 4. Similarly, अगर मैं यही process करता, starting with NV, similarly, starting by the same method, I can find that अगर मैंने NU की जगह NV लिया होता, we get n sub v, हाँ सर हाँ वहाँ पे b आता em माइनस fl, मैंने गलत fl लिखा, माइनस em, नहीं पिछली वाली fl minus em, fl minus em, fl minus sir, वहाँ पे em, e है यहाँ पे, fl minus em, ठीक है, it should be fl minus em, actually है ना, मैंने पेज चेंज किया ना इसी वजह से, it is fl minus em divided by h square, ठीक है, thank you. Okay, so similarly मुझे nv, हाँ सर इस इक्वेशन को 5th करना पड़ेगा, हाँ क्या मतलब, अच्छा इक्वेशन, हाँ नाम, एक्चुअली ये पेज, राइट, ओके दिस इज 5th इक्वेशन. तो सिमिलरली अगर मैं nv से शुरू करूं, आई विल गेट nv इज इक्वल टू fm, आई होप fn minus gm divided by h square into r sub u plus fm minus en divided by h square times rv. And in this manner, I can write n sub u and n sub v in terms of r sub u and r sub v, because they lie in the tangent plane, because n is a vector of magnitude 1, therefore perpendicular to its partial derivatives, and from there we get this thing, right? Now, in equations को हम कहते हैं Weingarten equations. Equations 5 and 6 are called Weingarten equations. Now what we can do, we can solve now. Now if I take h square से throughout multiply करूं, and then I, using the fact that this forms a basis r sub u and r sub v, तो इसका मतलब, so what we can do is actually r sub u को in terms of n sub v and r sub v लिखूं और फिर r sub u में substitute करूं. मेरे कहने का मतलब है, if I solve these equations, now if I solving 5 and 6, मैं चाहूंगा तो मैं home assignment में करो, for r sub u and r sub v, I can actually flip it, and I will get basically t square into r sub u is equal to fm minus en into n sub u plus em minus gl, sorry, fl times n sub v. And I can also show that t square into r sub v is equal to gm minus fn times n sub u plus fm minus gl times n sub v.
and of course t square is equal to ln minus m square. तो ये हम इसके लिए सिंबल यूज करेंगे. इसको सॉल्व अगर हम करें for ru and rv, this is what we get. Okay, now basically these are a Weingarten equation, but from this that means what I'm trying to say, what this actually highlights is that जो हमारा ये surface normal है ना n, अगर इसको हम मतलब देखें तो it contains pretty much all the information. क्योंकि इससे मैं आर यू अगर मुझे n पता है और इसके पार्शियल्स पता है n sub u and n sub v, I can find anything. I can find ru and rv also, right? And of course these fundamental magnitudes. तो so अगर मुझे इनके बारे में पता है, I can also find, मतलब converse भी true है. अगर मुझे ru rv पता है तो I can find nu if I know the fundamental magnitudes first and second. And the other way around is also true. That if I know n sub u and n sub v, then I can find r sub u and r sub v. Okay, so let's leave it there. Now इसके साथ हम कुछ corollaries कर सकते हैं. इसकी Weingarten equation से हमें कुछ results मिल सकते हैं. We could write them as remarks. क्योंकि हमने उसको theorem नहीं दिया, it was sort of a derivation. तो we cannot call it a theorem कि हमने कोई fact पता किया, लेकिन yes, they are equations. Now if I look at now dn जो है, it is of course, as we know, it is n sub u by chain rule. Chain rule नहीं, the definition of the complete total derivative, plus n sub v dv, and dr जो है, that can be written as r sub u du plus r sub v dv. If I take the dot product, dn dot dr, what I see, and of course dot product again distributes, so I can take this dotted with this and then take nv dotted with this. So what you will get, it would be nu, as you can see, dot ru, so multiplying the scalars du square, plus then nu dot rv, right, into du dv. Okay, plus then I multiply with this dot, taking dot product, not multiplying scalarly in a way. So that's also multiplication. So I would have nv dot r sub u dv du, plus of course then I have nv dot r sub v dv square. Now this is nothing but जो कि हमने अभी पढ़ा, this is minus l du square, this is minus m du dv, this is minus m du dv. These are numbers, so they commute. So minus, of course, this was n dv square. So this is basically minus l du square plus twice m du dv plus n dv square. So if I take the small element along the normal direction and of course the small element along the r and take the dot product, this is nothing but second order, second fundamental form. So second fundamental form जो है, it is the same as, actually some books introduce it in this manner. It is actually minus dn dot dr. And also, if I evaluate these, चलो पहला ये है, दूसरा अगर हम ये evaluate करें, the triple scalar product जो हमें आगे काम आएगा, definitely काम आएगा, n sub u, n sub v, I can write them as n dot nu cross nv, and using our Weingarten equations यहाँ पे ये जो मेरा nu cross nv है, अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें, वैसे अगर हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो भी सही होगा. सो nu क्रॉस nv बराबर होगा
Now let me leave it as an exercise. This is t square by h times n. तो होम असाइनमेंट तुम्हारा यूजिंग जो हमने वाइनगार्टन इक्वेशंस में किया है, वाइनगार्टन इक्वेशंस शो दैट n sub u cross n sub v is equal to t square h times n. अब n dot n 1 है, so it is just t square by h, which is nothing but, of course, this can also be written as t square is n minus m square, and h square is eg minus f square, so it is root of eg minus f square. तो ये तुम खुद इवैल्यूएट करो, ज्यादा मुश्किल नहीं है इवैल्यूएट करना है, सीधा वहीं से, डिफिकल्ट नहीं है. तो इसी तरह से तीसरा जो हम कर सकते हैं वो ये है n sub u कॉमा r sub u, ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर हो? So of course I can write it as n dot n sub u cross r sub u. Then again I use my Weingarten equations to, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इस क्रॉस प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए तो ये मुझे मिलेगा वहां से em minus fl divided by t square into nu cross nv, which is equal to, n को यहां लाएंगे, ये तो नंबर है, so basically I can write it as em minus fl divided by t square into triple scalar n sub u n sub v. Again we are using Weingarten equations, वो भी तुम खुद करोगे, right? Similarly ये सारे तुम खुद वेरीफाई करोगे, ये आइडेंटिटीज. You just use Weingarten equations and evaluate these cross products. You will see that n sub v r sub u का जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट होगा वो होगा, and of course I can just see that n sub u and n sub v का जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है ये किसके बराबर होगा? Can I write, is this is basically अभी जो हमने किया था ऊपर n sub nu, अगर मैं उसको यूज करूं वो किसके बराबर है? हाँ, ये t square by h. तो अगर मैं इसको यहाँ इवैल्यूएट करूं, so it is em minus fl into t square by h, और यहाँ पे है t square, so actually it is em minus fl divided by h. So this is the number. So similarly ये मिलेगा हमें en by following the same method using Weingarten equations basically, और evaluate करना है h. और अगर मैं लूं n ट्रिपल स्केलर विद nv rv, ये बराबर होगा fn minus gn divided by h, और last but not least वो होगा n sub u r sub v, ये बराबर होगा fm minus gl divided by h. तो ये इवैल्यूएट और ये इवैल्यूएट करना तुम्हारा होम असाइनमेंट है. You just have to substitute those, ना, ये जो Weingarten equations है, फिर थोड़ा उसको मैनिपुलेट करना है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से ज्यादा कुछ नहीं करना. तो इसमें अभी हमारे 4 मिनट है, जैसे ये खत्म हो जाए तुम फिर से ज्वाइन करोगे, ठीक है? ओके, लेट मी मूव टू नेक्स्ट थिंग. सो एक और है, दो फॉर्मूली है, सो इट्स एज एन एक्सरसाइज हम कर सकते हैं. वो ये है कि इवैल्यूएट द फॉर्मूले h times n cross product with n sub u is equal to m times r sub u minus l times r sub v, and h times, of course, n cross n sub v is equal to n times r sub v minus m times ru
RV. तो what it shows that कि ये जो cross product है ये भी tangent plane में lie करता है. It's a linear combination of R sub u and R sub v. ये जो cross products है. If you take the cross product, so this vector basically would be perpendicular to nu as well as perpendicular to n. So if it is perpendicular to n, it has to lie in the tangent plane. Now this shows that what would be actually the numbers involved in that linear combination when we write it as a linear combination of nu and ru and rv. Solution इसका बहुत ही simple है. ये कि we know that hn is equal to ru cross r because h is nothing but the length of ru cross r. Okay, so if you differentiate it partially and use the product rule, the cross product rule for differentiation, you just have to keep the order. बाकी differentiation का cross product मतलब product rule वही है जो वहाँ है, लेकिन यहाँ पे order maintain रखना है. By that I mean, तो यहाँ पे मैं लूंगा h sub u n plus h n sub u और मेरा जो right hand side होगा तो पहले मैं लिखता हूँ partially with respect to u, differentiating partially with respect to, because they are functions of two variables. अगर single variable होती तब भी यही product rule चलता. So that would be on the right hand side ruu cross rv plus ru cross rv. तो यहाँ पे ये important है कि मैंने order maintain किया, क्योंकि जो स्केलर फंक्शंस हैं उसको मैं ये पहले ये बाद में लिखता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा because cross product doesn't commute. So this is what I get. इसके बाद I take the cross product of both with n sub u. Now taking cross product of both sides with n, of both sides with the unit surface normal, I will get from the left, I will get h. अब देखो इसको कर लो n के साथ क्रॉस प्रोडक्ट दोनों साइड्स को, n